Want to see how a $20 billion mall looks like? Come with me on a walking tour of world's second largest mall, the Dubai Mall. The easiest way to reach Dubai Mall is via Dubai Metro. दुबई मॉल का एक स्पेसिफिक स्टेशन है और स्टेशन से ही डायरेक्ट एंट्री है दुबई मॉल के लिए. बट येस, इफ़ यू डोंट वांट टू वॉक मच देन आई वुड सजेस्ट आप अवॉइड करें दुबई मेट्रो, बिकॉज दुबई मेट्रो से जो दुबई मॉल तक का पाथवे है वो काफ़ी लंबा है. यू वुड हैव टू वॉक अ लॉट टू रीच द मॉल. दुबई मॉल ओपन हुआ था 4 नवंबर 2008 को एंड ये टोटल 502,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में बना हुआ है, जिसमें कि 1200 शॉप्स हैं, विच इज़ 1200 शॉप्स. द मॉल इज़ सो ह्यूज दैट मैं यहाँ पे 3-4 बार जा चुकी हूँ एंड टिल नाउ आई हैवंट एक्सप्लोर्ड एवरी बिट ऑफ इट. इतना बड़ा मॉल है कि आपको एक्सप्लोर करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 4-5 डेज़. इसीलिए यहाँ पे बगीज़ वगैरह भी अवेलेबल है, सो दैट इफ़ यू गेट टायर्ड यू कैन जस्ट हायर वन एंड जस्ट explore the mall. The mall has all the luxurious brands that you can think of, just like Coach, Ted Baker, Givenchy, a lot of makeup brands, you name it and you get it. इसीलिए यहाँ पे हर हफ्ते more than 750,000 visitors आते हैं, which makes it the second largest mall. The mall is divided into a lot of sections and every section, I must say, almost feels like its own mall. The food court has a lot of international chains as well, so don't you worry, you will get everything. Apart from shopping, the mall has a lot to do. I probably will make a specific video on that so that आपको detailed information मिले आप क्या क्या कर सकते हो मॉल में जाके. But फिलहाल let me take you to the iconic Burj Khalifa और उसका फाउंटेन शो. Now you must be wondering इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक्चुअली अंदर है क्या क्या. So let me tell you, it's actually a multi-use building that has restaurant, a hotel, residential apartment, some office space and basically it's a tourist attraction as well, जिसमें कि observation decks हैं. So यहाँ पे 2 observation decks हैं. The iconic building is standing at a height of 2,716 feet and has 163 stories above ground. But for tourists, आप सिर्फ 124th, 125th floor और 148th floor तक ही जा सकते हैं. The entry to the building is open for all 7 days, but the timing depends. It is divided basically into 2 hours, which is called prime hours and non-prime hours. So prime hours basically थोड़े से expensive होते हैं as compared to non-prime hours, and again weekdays and weekend में depend करता है आपका prime या non-prime hour कौन सा है. मैं timings, description and ticket cost सब description box में डाल दूँगी, but just for your information, the basic general cost of the non-prime hour is somewhere close to around 3,500 or 3,400 Indian INR. Outside the Burj Khalifa, there are a lot of restaurants जहाँ पर आप बैठ के enjoy कर सकते हैं फाउंटेन शो, बुर्ज खलीफा का व्यू and have some good meal. दुबई फाउंटेन शो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो शुरू होता है शाम को 6 बजे के बाद and it happens every 30 minutes. So if you are going there, this is a must watch because this looks very beautiful, specifically at the night. बिकॉज फाउंटेन शो के साथ लाइट शो भी होता है जो कि 7:45 के बाद स्टार्ट होता है.
So with this, we come to an end of this particular episode of walk-in tour at Dubai Mall. I hope you liked it. If you did, you know the drill. Don't forget to like, share, subscribe to the channel and share it with your friends as well if you liked it or they are planning to travel. I will see you in the next video where I am going to advise you on what all things that you can do when you are planning to go to Dubai Mall. क्या क्या activities वहाँ available है. So stay tuned. See you.